हार्डली सर 15% चार्ज में है अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिकॉर्डिंग दे देंगे, रिकॉर्डिंग मुझे 2-3 हाँ दिन सर टाइम हो जाएगा मतलब सर पीपल पावर वांट स्टेशन में रिकॉर्डिंग वेरी बैडली, मतलब मैं दे हम दूंगा लोग तुम के यहाँ लोग पे सर पावर स्टेशन में आग लग गया ना सर, 3-4 दिन से करंट नहीं है। डोंट वरी, यू विल गेट ऑल द रिकॉर्डिंग आल्सो। इवन तुम लोगों ने बोल दिया कि नोट्स चाहिए, मैं नोट्स भी बना दूंगा, पर थोड़ा ओके टाइम सर। देना पड़ेगा। और हाँ उसमें सर। मेरा चंदन का भी हेल्प चाहिए। चंदन हो क्या? चंदन, यस सर, यस सर, हाँ तुमको, तुम्हारा हेल्प चाहिए मुझे। यस सर। ओके जस्ट ए मिनट, हाँ मुझे 2 मिनट टाइम दो। और कुछ क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम दिस 2 क्वेश्चन? आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चन वन बाय वन, और उसके बाद मैं क्वेश्चन करूंगा तो उसका जवाब देना पड़ेगा, अगर तुम लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो। सर बोलो, सर रोल नंबर 39 सर। क्या नाम है? साकेत सर। साकेत, उस टाइम पे देर से क्यों ज्वाइन किया? सर वो विष्णु सर का सेमिनार चल रहा था तो उसमें अटेंड था, फिर रितम को फोन किया, फिर इसमें ज्वाइन किया। अच्छा मैं ओके सर बोलो, सर रोल नंबर 43। क्या नाम है? शुभ्रदेव दास। देर से क्यों ज्वाइन किया? सर मेरा ये घर का वाईफाई थोड़ा सा वो मतलब कि स्लो चल रहा था। आज दे दिया, रेगुलर नहीं दूंगा मैं। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। 48 नहीं, और नहीं होगा। क्या नाम है? उदित सर। हाँ उदित सर। उदित, देर क्यों हुआ हाँ। वो पहले बताओ। मतलब मेरा लैपटॉप में सर ज्वाइन कर रहा था, उसमें वेटिंग दिखा रहा था, फिर मैं मोबाइल में ज्वाइन किया सर, तब अब हुआ मोबाइल से। अच्छा, उसमें टाइम चला गया। हाँ मैं वही Just सर a लैपटॉप minute. में बहुत टाइम ट्राई कर रहा था, फिर नहीं हुआ तो फिर मोबाइल से ज्वाइन किया। Just a minute. हाँ क्या उदित ना? हाँ सर। Can you see my screen properly now? Yes sir. Okay. Now first coming to the question of TCP and UDP. The first question what is been asked. So TCP is basically connection oriented protocol and UDP is connection less protocol. So TCP and UDP are being used at the time of sending your data over the internet. जब हम लोग कोई डेटा सेंड करते हैं, किसी भी डेटा हो, either it will be sent using TCP protocol or UDP protocol. Difference between TCP and UDP is like that. In case of TCP, whenever you are sending a request, suppose I am sending the request, open www.google.com. So whenever we are typing www.google.com, so it's a request we are sending to the Google server. Now, until and unless we get the reply from Google server, that is the acknowledgement, we are not going to send the second request to Google. Similarly,
Google also, whenever they will upload the page, they will send the page to you until and unless they get the acknowledgement, whatever Google has shared with you, Google is not going to send the next document. Means data will always be shared with you as a request response basis. So request response basis means, suppose, just a minute. Here is the sender, here is the receiver. Now, suppose sender is Shupradar and receiver is Himjyoti. Now, sender is sending one request. Now, until and unless I get the acknowledgement from the receiver, I am not going to send the second request. Similarly, when it gets the request, it will send the response to it also. Response means whatever data you are asking from the receiver will send the data. Now, until and unless you send, I am drawing it again. This is sender, this is receiver. Now, sender is sending one request. It gets the acknowledgement that okay, I have received the request only. Okay, and after that, sender will send the data. Now, after sending the data, suppose the data is not like that, the entire data center is sending. So suppose the entire data, whatever the receiver is going to send, suppose the data size is comprised of 100 numbers of packets. Now, receiver has sent data 1. Until and unless receiver gets the acknowledgement of whatever data has being sent, receiver is not going to send the data number 2. Now, in this way, all the data you are sending and you are getting the acknowledgement. Based on this, your entire data sending procedure is moving on. Now, what is the advantage? Advantage is that I get sure that all my data are being sent from the receiver to the sender, and it is being received by the sender only. Or whatever data is sent by the sender, it is being received by the receiver only. Means I cannot send my entire data at a stretch, because the data size, maybe suppose एक movie download कर रहे हो, पूरा movie क्या एक ही साथ download हो जाएगा? नहीं होगा. वो movie तुम्हारा पूरा data wise, packet wise download होते रहेगा. तो हर एक इसका एडवांटेज क्या होगा कि तुम्हारा ये TCP प्रोटोकॉल के थ्रू every time until and unless I get the acknowledgement, I am not going to send the next data. सर टीसीपी तो सर टीसीपी और नेटफ्लिक्स में भी यूज होता था. TCP, no, Netflix में कभी TCP यूज नहीं होता. I am coming to that point. Okay. Now, in case of UDP, what is there? What is the concept of UDP? Is that one side it is sender, another side it is receiver. Now, whenever sender is sending data, it is not going to wait for the acknowledgement. Whether you have received it or not, I will try my best to send all the data, but it's up to you. It's up to the network whether you are going to receive all the data or not. Okay. Suppose 2 packets are not being received, but the rest of the 3 packets are being received. Okay. Now, if you cannot afford with the data quality, that case you have to use the TCP protocol. And where you can afford with the data quality, but you cannot afford with the timing, because if I go for every time for the acknowledgement, that case the time will require more, as well as the bandwidth also require more, because for each of the data I require a separate acknowledgement. Okay, so the bandwidth requirement is also more, right? Now, if I have the good bandwidth, or I can compromise with my timing, means that I can compromise with my delay, means that to send the data it can take more time. So if I can compromise with this, for those kind of services I will use TCP. That is why TCP is sometimes called connection oriented as well as reliable protocol. Reliable protocol. Okay. But this one is connectionless. Connectionless, as well as it is called best effort protocol, best effort service, best effort.
Means that I will try my best to send my data, but it is not guaranteed that you will receive the data or not. Now, which cases we can use TCP and which cases we can use UDP? Now, suppose for SMTP, simple mail transfer protocol, or FTP, file transfer protocol, in those cases, I cannot compromise with the data quality, because if my mail consists of 100 numbers of packets, if 2 or 3 packets get lost, that case my entire mail cannot be readable. I cannot read the entire mail. इसलिए देखते हो ना, तुम लोग कोई अगर डेटा डाउनलोड करने का कोशिश करते हो, वो 99% में आके भी रुक जाता है, तो यू कैन नॉट डाउनलोड द एंटायर थिंग, तुम ओपन भी नहीं कर पाओगे उसको, राइट और रॉन्ग? Yes, sir. Because they are using the TCP protocol over here. But in case of media, online media transmission, online video transmission, that case, if I wait for the acknowledgement, that case it will take long time, larger amount of time to my entire data to get transmitted properly. Instead of this, what they do, that they use the best effort services. Means they send the data one by one, but without waiting for receiving the acknowledgement. Now, if out of these 3 or 4 packets are being lost, or the 10% packets are being lost out of the 1 million packet, 10 lakhs packet, if 1 lakh packet gets lost, still I will be able to watch the video. What will happen then? There are several protocols are there. In some of the protocol, what happens that they reduce the resolution quality of the video. When they find out that the bandwidth is not good and my maximum packets are getting lost in the highest resolution, they will immediately lower the resolution. Okay, so that type of protocol is called actually variable bitrate protocol. Means whatever your bitrate, that will vary. Or you can convert that variable bitrate to constant bitrate. Constant bitrate means every time whatever data is going, the bitrate will always become constant. आप लोग का ऐसा होता है ना, नेटफ्लिक्स में या यूट्यूब में जब मूवी देखते हो, या कोई whenever you are going through any media content, so you find out that network is poor, so your video quality also becomes poor. Okay, means they are using the variable bitrate. Now here you have an option that you can fix the bitrate, that whatever be my network quality, constant it to 1084. I need the 1084. That case, what they do, that they immediately change it from UDP to TCP protocol. उसमें क्या हो जाता है, तुम्हारा दिन भर घूमते ही रहता है, जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है सब पैकेट का, तब तक वो घूमते ही रहेगा. जब पूरा एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, then it will be shown to you. What they do, that time they convert your entire technology to store and forward technology. Means पहला 5 सेकंड का डेटा, वो 5 सेकंड का वीडियो कंटेंट का डेटा वो लोग पूरा स्टोर कर लेगा, एंड आफ्टर दैट इट विल बी फॉरवर्डेड टू यू फॉर व्यूइंग. अगेन 5 सेकंड का फिर स्टोर करेगा, फिर दे विल फॉरवर्ड इट फॉर व्यूइंग. इज दिस क्लियर टू यू? Yes, sir. सर जो वो 3-वे हैंडशेकिंग जो है वो सर टीसीपी में यूज होगा ना सर, कनेक्शन बनाने के लिए? सर 3-वे हैंडशेकिंग. 3-way handshaking is a procedure of TCP. You are absolutely right. सर उसमें भी तो सर एक पहले एक डमी बिट सेंड करेगा, उसका एक्नॉलेजमेंट आने से फिर रिक्वेस्ट एकदम कनेक्शन फॉर्मेशन के लिए सर. बट यूडीपी में तो वो स्ट्रीमिंग के लिए वो नहीं यूज करता है. नहीं करेगा. पर अभी कुछ स्ट्रीमिंग साइट क्या कर रहा है, कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए दे इनिशियली स्टार्टेड विद अ वेरिएबल बिटरेट. अब तुमको बिटरेट भी फिक्स करने का ऑप्शन आ जाता है ना, कि नहीं मुझे वेरिएबल नहीं चाहिए, लो क्वालिटी नहीं चाहिए, मेरा बैंडविड्थ जो भी हो, मुझे हाईएस्ट क्वालिटी वीडियो चाहिए, मूवी देखेंगे तो अच्छा देखना चाहिए. तो नेट का मतलब बफर होता रहेगा वही ना सर. या जब हम लोग उसको फिक्स कर देते हैं, that case they think that okay, the customer requires all the packets, I cannot lose this single packets out of their viewing experience, so immediately convert it from UDP to TCP. Got my point? Yes sir. Okay, any other question? Okay, if there is no question, then I'm coming to Girija's question. गिरिजा ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज पिगी बैकिंग. पिगी बैकिंग एक अच्छा टेक्नोलॉजी है. उसमें क्या होता है,
Suppose this one is my sender. This one is my receiver. Now sender is sending one data. Sender is sending one data. Now, as we are using, if I require the acknowledgement, that time the receiver will send another data. Receiver is sending data 1. Sender. When receiver is sending data 1, with that, what it is doing that it is sending the acknowledgement 1 also. Acknowledgement 1 means I have received your data also. Now, so what the sender is getting here, actually this one is also sender plus receiver. This one is also right now sender plus receiver. This one is also sender plus receiver. Okay. Now here this time for this data it becomes receiver. Okay. At the time it is receiving the acknowledgement of whatever data also he is sending. It is embedding with the same data. Okay. Now if the sender is going to now, if this sender is going to send data 2, when it is sending data 2, it will send the acknowledgement 1 of this data. Now, when the receiver, this receiver will send his data, that means he is sending data 2, he will send, earlier he has sent data 2 now, so now he will send. You got my point? Means that at the time of sending my data, suppose Himjyoti sent me a request, at the time of sending the response to Himjyoti, what I will do that I will embed the acknowledgement of my previous data, whatever Himjyoti has sent to me. उसमें मेरा क्या हो जा रहा है? I need not to send the acknowledgement separately. So my bandwidth requirement is same, but still I will be able to send my acknowledgement. Now the question is why the UDP people are not using this technology then? Because it is not like that every time sender and receiver will transmit communication between them. Sometimes it happens that I am only sending and you people are only receiving. That time I am not going to get any data from your side. If I am not going to get any data from your side, so there is no question of acknowledgement to come. जैसे मैं रोज आयुष मोरे को एक क्वेश्चन पूछते जाता हूँ, आयुष मोरे कभी आंसर नहीं देता है. वो क्या करता है, वो म्यूट करके चुपचाप बैठ रहता है. That means I am giving him the data, but he is not going to acknowledge my data and he is not going to respond to my data. उसमें पिगीबैकिंग होगा क्या? नहीं होगा. पिगीबैकिंग कब होगा? हाँ हाँ हाँ, हम सुन रहे हैं आयुष मोरे, आप सुन रहे हो. आपको मैंने 10-15 क्वेश्चन पूछ चुका हूँ लास्ट 15 डेज में. एनीवे यू नेवर हैव द courtesy to answer to my question. तो मैंने सोच लिया था कि तुम्हारा स्पीकर खराब हो सकता है, पर अभी देख रहा हूँ कि अटेंडेंस तो ठीक ही दे रहे हो. You should answer to my query. Anyway, so for this kind of query response system, you can never use the piggybacking. Where you can use the piggybacking? Whenever I am giving you some question and you are responding, means two-way communications are going on. So that time only I can use the piggybacking technique. You got my Girija? You got your answer? Yes, sir. Yes. Is there any other question? Regarding the COAP application protocol, constant application protocol? अभिषेक समझ में आया? Hello? Is there any other question? Otherwise, I will start asking you question. Hello, can you hear me, students? Hello?
Students, can you hear me? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yeah. Now tell me, what are the difference between the conformable message and non-conformable message? आयुष मोरे, तुम तो सुन रहे हो ना? अब तुम जवाब दो. What is the difference between conformable message and non-conformable message? याद नहीं है। याद कैसे रहेगा? मैं पूछा था कि तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं. वेदांतो, विक्रमादित्य, Yes, sir. Yes, sir. can you Hello, tell me sir. what is the difference between conformable and non-conformable message? सर कंफर्मेबल मैसेज सेंड होता रहता है जब तक मतलब वो सर मैंने टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ किया था ना कॉन्फर्मेबल और नॉन कॉन्फर्मेबल मैसेज के बारे में. Just a minute. Can you see my screen? I have to reshare again. Just a minute. It is getting some problem. Yeah. Now, can you see the conformable message and non-conformable message? Means that COPE basically is created on top of the UDP protocol only, because wherever we use the COPE, where we use basically the COPE protocol, we use COPE protocol in a constraint node environment where the node have the limited bandwidth as well as the limited power consumption limitation also. So for that we cannot go for the acknowledgement kind of thing. But here, but if we use the COPE protocol in some places where there is no bandwidth limitation, like or the battery limitation, like for smart home application. Smart home application. Can you see my screen? Yeah, just a minute. Yeah, for the smart home application, smart automation or smart city application. Smart city application. So in those applications, so all the nodes, that means we'll connect the nodes to where? We'll connect the nodes with our electrical appliances or switch or fridge or TV. So those will be connected with the sensors, right? And we are going to get the data, or our health wearable devices through which we used to get the patient's blood pressure, pulse rate, or the how much calorie they have burned. So for those cases, we never have to think about that how much battery power consumption level right now, because they all constantly get the charge
from the external sources. So for those cases, we can use the confirmation message plus acknowledgement kind of thing. But if we set up the IoT ecosystem in a place where the bandwidth limitation is there and the power consumption limitation is there, so in those cases, we have to use the non-conformable messages. Is this clear to you, students? Conformable and non-conformable? So we'll use this COAP protocol in case of on top of UDP, but still for the smart home applications or for the smart city application, we can use it, the conformable message where the acknowledgement kind of thing will also be there. Even Kaushik also told yesterday that in some of the IoT applications, we need the acknowledgement also to confirm that all the data are being received by the receiver. So that case, we need to have that confirmable message kind of thing. Okay. एक minute. Okay, so is this clear to you? Student, is this clear to you? So can you repeat? Means that COAP protocol basically TCP है COAP protocol पहले बात तो मेरा क्वेश्चन ये क्वेश्चन का जवाब दो COAP protocol हम लोग कौन सा लेयर में यूज करते हैं सेशन लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर Who can give me the answer? हाँ सेशन लेयर सर सेशन लेयर उसका नीचे कौन सा लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर सर ट्रांसपोर्ट लेयर में हम लोग कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं टीसीपी यूटीपी टीसीपी यूडीपी हम लोग कोप के लिए कौन सा यूज कर रहे हैं सेशन सेशन में ट्रांसपोर्ट लेयर में कौन सा यूज कर रहे हैं यूडीपी यूज कर रहे हैं ना तो यूडीपी में तो आपका एक्नॉलेजमेंट नहीं रहेगा रहेगा क्या नहीं सर नहीं रहेगा पर हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि हाँ एक कंफर्मेबल मैसेज बोल के है जहाँ पे एक्नॉलेजमेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस कंफर्मेबल मैसेज ओके तो एक तरफ से हम लोग बोल रहे हैं कि यूडीपी यूज करेंगे तो फिर यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट कहाँ से आ गया ओके इन सम केसेस वी कैन यूज दैट एक्नॉलेजमेंट व्हिच केसेस like where we have sufficient amount of bandwidth as well as the power level of the your sensor node. The sensor node has the power level. That case also we can use this conformable message kind of thing. तो कहाँ कहाँ पे मेरा power level लेके कोई problem नहीं है. Like in your home automation or smart city project. In this kind or the healthcare management through IoT, in those cases, whatever be the sensor nodes are there, they are connected with have the sufficient power source are there. जैसे तुम अगर घर में लगाओगे घर में तो पावर सोर्स तुमको मिलेगा ही मिलेगा कि नहीं बोलो यस और नो हाँ सर स्मार्ट सिटी के लिए जब बनाएंगे उसमें पावर मिलेगा कि नहीं या हेल्थ केयर मैनेजमेंट में तुमको पावर सोर्स हर टाइम मिलेगा यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट द पावर सोर्स पर अगर मान लो जंगल में हम लोग IoT प्लेस कर रहे हैं या एग्रीकल्चरल फील्ड में या वार फ्रंट में where there is uncertainty about the power so that cases we will use UDP protocol below your core protocol okay where non-conformable messages will be used okay and if it is a cases where there is no chances of getting sufficient amount there is no issue of sufficient amount of power that cases we'll use the conformable message protocol now is this clear to you student कहाँ पे तुम लोग conformable message यूज करोगे कहाँ पे non conformable सर मतलब कंफर्मेबल सर टीसीपी प्रोटोकॉल यूज करेगा ना सर हाँ TCP प्रोटोकॉल यूज करेगा और नॉन कंफर्मेबल सर यूडीपी प्रोटोकॉल यूज करेगा ओके सर now is this clear और एक केसेस हो सकता है जहां पे हम लोग पिगी बैकिंग टेक्निक यूज करेंगे
कहाँ पे पिगी बैकिंग टेक्निक यूज करेंगे बता सकते हो? जहां पे मुझे एक्नॉलेजमेंट भी मिलेगा और मुझे इतना डेटा ट्रांसफर का ये झमेला भी नहीं है, बिकॉज वी आर सेंडिंग द एक्नॉलेजमेंट विद द डेटा ओनली। तो कहाँ पे पिगी बैकिंग यूज करेंगे? अभी अभी बताया मैंने। Confirmable. No, that is confirmable. No. Confirmable and piggybacking is different. In case of piggybacking, what will happen that with the data we are sending the acknowledgement together. No, Pranav. It is not about video conferencing. Just now I told na, whenever the sender and receiver is exchanging the data frequently. अगर वन वे कम्युनिकेशन है, अभी अभी आयुष मोरे का एग्जांपल मैंने दिया था ना, जितना बार मैं क्वेश्चन कर रहा हूं आयुष मोरे नेवर गिव द आंसर। दैट मींस इट्स वन वे कम्युनिकेशन ओनली। मैं चिल्लाते जाता हूं पर आयुष मोरे चुपचाप रहता है। बट in if he gives reply to me every time, that case what will happen? So there will be a equivalent exchange of data between the sender and the receiver, between me and you. So in those cases, whenever my data is going, at the same time I am sending the acknowledgement of Ayush, or whatever Ayush is sending, he is sending the acknowledgement, sir आपका डेटा मुझे मिल गया। सर तो वो कंफर्मेबल मैसेज हो गया ना सर? नहीं, अरे उसके साथ कंफर्मेबल के साथ ये डिफरेंस समझो। कंफर्मेबल में क्या होता है, वो ये कंफर्मेशन मैसेज अलग जाता है, एक्नॉलेजमेंट अलग जाता है। और तुम्हारा पिगी बैकिंग में क्या हो रहा है? पिगी बैकिंग में मैं डेटा मान लो डेटा 1 सेंड किया, ठीक है, और ये रिसीव करने के बाद वो उसका जब सेंड करेगा वो उसका डेटा अलग है। वो जब डेटा सेंड करेगा ही विल सेंड द एक्नॉलेजमेंट ऑफ दिस डेटा। काम करता है तो इसको भी येलो कर देता हूं। एक्नॉलेजमेंट ऑफ होम, एक्नॉलेजमेंट ऑफ दिस डेटा। एक साथ बाइंड करके सेंड कर देंगे। मतलब ऐसा है, मैं तुमको एक पैकेट दे रहा हूं ना, उस पैकेट के साथ उसका बोल देना कि तुम्हारा पुराना चिट्ठी मुझे मिल गया। यू गॉट इट? और कंफर्मेबल में क्या हो रहा है, एक्नॉलेजमेंट और डेटा अलग अलग जा रहा है ना। हाँ सर, एक्नॉलेजमेंट और डेटा एक ही साथ जाएगा पिगी बैकिंग में। आया समझ में आपको? हाँ सर। अभी भी सर रिमोट एरिया में नॉन कंफर्मेबल यूज होगा ना? नॉन कंफर्मेबल यूज होगा? conformable is separate, non-conformable is separate, piggybacking is also separate. Conformable में data acknowledgement are going separately. Non-conformable में सिर्फ डेटा जाता है, कोई acknowledgement जाता ही नहीं है। और piggybacking में data and acknowledgement will go, but it will go in a together. मैं और एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो मैं हिमज्योति के साथ कुछ डेटा एक्सचेंज हो रहा है। आई सेंड द डेटा टू हिमज्योति। हिमज्योति मैं तुमको ये पैकेट दिया, तुम दूसरा पैकेट भेजो। तो हिमज्योति वो जब पैकेट मिला है, हिमज्योति दूसरा पैकेट भेज रहा है। भेजने के टाइम पे उस पैकेट में लिख दे रहा है, सर आपका पुराना डेटा मुझे मिल गया, जो डेटा भेजे थे वो भी मिल गया। अब मैं हिमज्योति को अगर सेकेंड डेटा भेजूं, दैट टाइम आई विल ऑल्सो राइट इन ब्रैकेट दैट हिमज्योति तुम्हारा डेटा भी मुझे मिल गया। आप एक मिनट रुक के जाइएगा, समझ गया? दैट इज कॉल्ड पिगीबैकिंग। और अगर ऐसा होता, आई एम सेंडिंग ए डेटा, आफ्टर दैट until and unless I get the acknowledgement from Himjyoti, I will not send the next data. सर वो तब कंफर्म हो गया ना कि मतलब सेंड हो गया। हाँ, तो वो तो अलग अलग से भेज रहे हैं ना। यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट और डेटा एक साथ भेज रहे हैं क्या? अलग अलग भेज रहे हैं। और पिगीबैकिंग में डेटा और एक्नॉलेजमेंट एक ही साथ भेजे। एक साथ। हेलो सर, मैं तुम लोगों को और एक डायग्राम बना के नेक्स्ट डे अच्छी तरह से दिखाऊंगा। बाय दिस टाइम माय रिक्वेस्ट इज, एक काम करना, मैं तो ये पीपीटी अपलोड कर दूंगा। हाँ, एक काम करना, नेट पे भी थोड़ा सर्च करना पिगीबैकिंग टेक्निक। हाँ, ओके, डोंट गेट पैनिक, इट्स वेरी इजी concept. You will understand this one. Okay sir. हेलो सर। Okay, so I am ending this session today. अगर कोई हेलो क्वेश्चन है अभी, हाँ बोलो। सर, हम लोग का जो रिमोट एरिया में हम लोग नॉन कंफर्म